Okay, in linear motion, suppose this is the object, force exerted in this direction, acceleration in this direction, so the velocity also in the same direction. So when the velocity is parallel to force or acceleration, then motion is called linear motion. So the velocity has only one component, and the velocity is parallel to the force or acceleration. This is linear motion. Now come to the projectile motion. In projectile motion, velocity has both components together. तो ये आपके पास बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन हो गई। इसमें वेट आपके पास बेटा नीचे ऐड कर रही है फोर्स, ठीक है। तो आपने याद रखना है जिसमें वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स इकट्ठे होते हैं, दैट्स अ प्रोजेक्टाइल मोशन। वेलोसिटी का एक कंपोनेंट हो, फोर्स की डायरेक्शन में हो, दैट्स अ लीनियर। तो ये भी याद रखें, इफ द बॉल इज फॉलिंग डाउन स्ट्रेट, दिस इज आल्सो द लीनियर मोशन, क्योंकि फोर्स कौन सी लग रही है, वेट, वेलोसिटी इसी की डायरेक्शन में है, तो दिस इज लीनियर मोशन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है फॉर A2 फिजिक्स, that is the next motion, which is circular motion. हमने circular motion को डिस्कस करना है। Suppose this is a circle. अब अगर बेटा इसको हम मार्क करें, so this is the center and this is called the radius of the circle. If this point is the starting point P, और हम सर्कल के ऊपर ट्रैवल करते हैं, यहाँ से चलते जाते हैं और थोड़ी देर के लिए बेटा हम इस पॉइंट Q के ऊपर रुक जाते हैं। So the length of arc PQ, which is represented by L, is called linear distance and it will be measured in meters. This is also radius. लेकिन अगर हम P और Q के बीच में perpendicular distance लें, so this is x, so this x distance is in fixed direction, so this is called displacement and it is also measured in meters. Now the next, अगर आप check करें बेटा, so here is an angle, ये जो angle आपने sweep कर दिया at the center theta, this is also distance, so theta at the center of the circle is called angular distance. तो जो थीटा होता है बेटा, मैथ में हम करते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, जो एंगल मेजर करते हैं डी से प्रोटेक्टर से, दैट इज एंगुलर डिस्टेंस एंड इन फिजिक्स दिस एंगुलर डिस्टेंस इज मेजर्ड इन रेडियन। पहले हम डिग्री में करते थे, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? तो अगर तो आपके पास बेटा आंसर आता है डिग्री में, जो यूजुअली हम करते हैं, if it is multiplied by pi over 180, so the answer of the angle will be in radian. तो डिग्री को pi से मल्टीप्लाई करें, 180 से डिवाइड करें, angle is converted into radian. Similarly, if answer required in degree and the given angle in the radian, then radian times 180 over pi, so the answer will be in degree. So there are three distances. One is the linear distance. Number two is the angular displacement.
and the third is the angular distance. So theta is actually distance, but which distance? Angular distance. So तीन distance आपके पास है बेटा. Now next, we suppose that the time taken from P to Q is t second. आप P से बेटा चले, Q पे पहुंचे और आपको टाइम लग गया t सेकेंड. तो आपके पास डिस्टेंस और टाइम है. तो अगर हमारे पास डिस्टेंस और टाइम हो तो वी कैन कैलकुलेट अदर फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज कॉल्ड स्पीड. क्योंकि स्पीड ये डिस्टेंस और टाइम से डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है. तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं. नंबर वन, द लीनियर स्पीड. So linear speed is linear distance divided by time. Formula will be V is equal to L divided by T, and the unit, simple, meter per second. Number two, velocity or speed in a fixed direction. So velocity V is equal to displacement divided by time and measured in meter per second. Number three, very, very important, angular speed. So angular speed is equal to angular distance divided by time. So angular speed symbol omega होता है बेटा, ये W की तरह, and angular distance is theta, time is t. So angular speed omega is angle divided by time, and angle measured in radian. So we can write radians per second. आप capital R लिख सकते हैं, आप small r लिख सकते हैं, जो मर्जी लिखें. Allowed. Okay. So look at this. In circular motion, there are three distances, 1, 2, and 3. That's why there are the three speeds. One is the linear speed, other is the velocity due to displacement, and the third is angular speed due to angle. Okay. Now suppose हम ये फिर स्टार्ट करते हैं जर्नी बेटा, और हम ये P से स्टार्ट करते हैं, Q पे पहुंचते हैं, रुकते नहीं हैं, और वो कंटिन्यू करते हैं पूरी जर्नी, एंड वी कंप्लीट दिस लूप, दिस सर्कल, पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं बेटा. तो अगर आप पूरा सर्कल राउंड करते हैं, कंप्लीट करते हैं, देन तो जो आपके पास टोटल डिस्टेंस in one complete rotation, उसको circumference कहेंगे, which is equal to 2 pi r. Total distance in one complete rotation is circumference, which is 2 pi r. और अगर वो पूछे what is the displacement in one rotation, तो बेटा आपने P से स्टार्ट किया था, P पे जाके रुक गए, तो डिस्प्लेसमेंट इज 0 मीटर, क्योंकि जहां से स्टार्ट किया था वहीं रुक गए, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी. एंड नंबर 3, द एंगुलर डिस्टेंस इन वन रोटेशन, आपने कितने एंगल स्वीप कर लिए, तो टोटल एंगल बनते हैं 360, लेकिन हमने इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में. तो 360 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180, तो ये बन जाएगा बेटा 2 पाई रेडियन. इसका मतलब ये है 180 डिग्री पाई रेडियन की इक्वल. ये जो मैंने 0 लिखा है, दिस इज सिंबल फॉर डिग्री, और ये जो C लिखा है, दिस इज सिंबल फॉर रेडियन. So in complete rotation, circumference is the total distance, displacement is 0, and the angular distance in one rotation is 2 pi radian, mean 360 degree. और आपको जो टाइम लगा, time to complete one rotation
that is called period, और उसको कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, स्मॉल t से नहीं करेंगे. So time to complete one rotation is period and it is represented by capital T, जिसको आप time period भी कहते हैं. Okay, now linear speed is linear distance divided by time. लेकिन complete rotation अगर करेंगे, so this is 2 pi r over capital T. Angular speed omega, which is angle divided by time. So total angles are 2 pi radian divided by t. और displacement आपके पास बेटा तो 0 है, इसलिए हम velocity तो निकाल नहीं सकते. 0 divided by time period 0 हो जाएगा वो तो. So angular speed omega is equal to 2 pi over t, which can be written as 2 pi multiplied by 1 over time period. So 2 pi multiplied by f, because 1 over time period is frequency. तो ये आपके पास ओमेगा के फिर 3 फॉर्मूले हो गए, sometimes this, sometimes this, sometimes this. तो अगर तो आपके पास बेटा टाइम पीरियड दिया हुआ है तो 2 पाई ओवर टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2 पाई एफ, और अगर आपके पास एंगल दिया हुआ है रेडियन में, टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ, देन थीटा बाय टी. नाउ कम टू दिस. This can be written as 2 pi over capital T into R. So अब ये 2 pi over capital T is the angular speed, so we can write this omega angular speed into R. So the very important relation is V is equal to angular speed multiplied by radius. So this is the relation between linear speed and angular speed. बेटा एंगुलर स्पीड और लीनियर स्पीड इक्वल नहीं होती, उनके बीच में ये रिलेशन होता है. जब भी लीनियर स्पीड के ऊपर आप एंगुलर स्पीड डिवाइड करेंगे, द आंसर विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल. नाउ दिस एंगुलर स्पीड can be written as 2 pi f. Now this portion is the angle and this portion is the frequency. So sometimes this omega is known as angular frequency because it's the product of angle and frequency. तो angular speed तो है ही है, लेकिन इसका नाम sometimes angular frequency भी लिखा होता है. Look, this is the length of the arc, and this is the sector of the circle. O-level maths, length of the arc is equal to theta divided by 360 into 2 pi r. So the length of the arc, theta angle, 360 can be written as 2 pi into 2 pi r, so 2 pi cancel, so L is equal to theta r. और जिन लोगों के एड मैथ थी ओ लेवल के अंदर उनको पता है, उन्हें फॉर्मूला पढ़ा था S is equal to r theta, so same thing, इधर हमने L is equal to r theta लिख दिया. So this is the relation between linear distance and angular distance. So the length of the arc is equal to r theta. Theta is the angular distance, length of the arc the linear distance. So again, L divided by theta is r. L divided by theta is r. और यहाँ भी हमने यही पढ़ा था कि जब भी आप linear velocity के ऊपर angular velocity divide करेंगे बेटा, look at this, it's r. So अभी पढ़ा L divided by theta is also equal to r. So we can write L divided by theta is equal to r, and r is equal to v over omega. So L over theta is equal to v over omega. So this is the ratio between
two speeds and two distances. L is the linear distance, V is the linear speed, theta is the angular distance, and omega is the angular speed. Now, we have one formula, important, omega angle theta by T, omega 2 pi over time period, omega 2 pi F. Number 4, V is equal to R omega. Number 5, L is equal to R theta. And number 6, V over omega is equal to L divided by theta. So अभी तक हमने ये फॉर्मूले पढ़े which are very very important. Omega theta by T, omega 2 pi over capital T, omega 2 pi F, V is equal to R omega, L is equal to R theta, are the ratio between velocities and linear distances and angular distance, right? Now, for the circular motion, a force is required, which is known as centripetal force. And the centripetal force acts towards the center of the circle. लेकिन जो वेलोसिटी होती है बेटा उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होती है, जब आप बेटा Q पॉइंट पे पहुंचेंगे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो स्पीड कांस्टेंट हो सकती है सर्कुलर मोशन में। आप गाड़ी चला रहे हैं सर्कल में, एक ही स्पीड से चला रहे हैं लेकिन डायरेक्शन बदल रहे हैं, इसलिए वेलोसिटी चेंज। सो इन सर्कुलर मोशन velocity changes due to change in its direction. तो भाई वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो जब भी वेलोसिटी चेंज हो रही है इसलिए हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। तो सर्कुलर मोशन के अंदर हर वक्त एक्सेलरेशन होता है और उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ कहाँ होगी? इट इज अलोंग द फोर्स। तो जो सर्कल में एक्सेलरेशन होता है वो भी टुवर्ड्स द सेंटर होता है एंड इट इज नोन एज सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन। अब जो फोर्स सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है या जो भी फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है दैट इज नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्स। सो ये जो सेंट्रीपीटल फोर्स है इट इज ऑलवेज अनबैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए अनबैलेंस ही रहना है। सो three quantities, acceleration and force, both are acting towards the center of the circle, and the velocity is making 90-degree angle with both force and acceleration. So this is the difference between linear and circular motion. तो अगर आपसे पूछा जाए जनाब what's the difference between linear and circular motion, तो linear motion के अंदर velocity force acceleration के parallel, but in the circular velocity is perpendicular to force and acceleration. This is the difference. लेकिन similarity क्या है दोनों के अंदर? एक छोटी सी, दोनों के अंदर force और acceleration आपस में parallel रहते हैं। वेलोसिटी अगर उनके पैरेलल तो लीनियर मोशन, वेलोसिटी परपेंडिकुलर तो वो आपके पास कौन सी? सर्कुलर मोशन। सो द सेंट्रीपीटल फोर्स इज एन अनबैलेंस्ड फोर्स, ये कभी बैलेंस नहीं हो सकती। इट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। एंड नेक्स्ट, द सेंट्रीपीटल फोर्स डिपेंड्स ऑन three factors: mass, number 2 speed of the object, and number 3 radius of the circle. इन तीन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है बेटा, मास पे, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट और रेडियस ऑफ द सर्कल। किसी स्टोन को आप व्हिर्ल कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं इन अ सर्कल, व्हाट इज द मास ऑफ द स्टोन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द रोटेशन एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, तीन पे डिपेंड करेगी।
तो हम चेक करते हैं बेटा कि फॉर्मूला क्या होगा. सो F इज इक्वल टू m unknown power x, b unknown power y, radius unknown power z. So chapter number 1 AS, force measured in kilogram meter second power minus 2, mass measured in kilogram power x, speed meter per second power y, the radius meter power z. अब कंपेयर करते हैं बेटा. फर्स्ट वी कंपेयर kilogram. The left side per kilogram power is 1 and the right side kilogram power is x. So the x is 1. Then we compare the meter. Left side power is 1. Right side 2 powers. एक y लिखी हुई एक z. So we will add y plus z. इसको छोड़ दें, अभी solve नहीं हो सकती. Come to the next. Second, left side power minus 2 and the right side power is just minus y. And minus cancelled. Y is equal to 2. So 1 is equal to 2 plus z. So z is equal to 1 minus 2. That's minus 1. So z is equal to minus 1. So chapter number 1 AS का वही लगाया बेटा. x1, y2, z minus 1. Then what will be the formula? Look, f is equal to m power 1, v power 2, r power minus 1. So the formula becomes m v square over r. So this is the formula for the centripetal force. Now, this is always unbalanced. According to Newton's second law, every unbalanced force is equal to ma. So we can substitute this force. Ma is equal to mv square over r. M cancelled. So it is A is equal to v square over r. Now next. So acceleration A is equal to v square by r, right? F is equal to mv square over r. तो बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी आपके पास आ गया, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला भी आपके पास आ गया, राइट? लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास तो दो स्पीड हैं. फर्स्ट इज द लीनियर स्पीड एंड द अदर इज द एंगुलर स्पीड. सो एंगुलर स्पीड तो वो तो होती है, कहां से निकलेगी? v इज इक्वल टू, या v को आप जब सब्स्टिट्यूट कर लें, v इज इक्वल टू r ओमेगा. तो इस फॉर्मूला के अंदर वी कैन सब्स्टिट्यूट f इज इक्वल टू m v की जगह बेटा r ओमेगा होल स्क्वायर ओवर r. लुक एट दिस बेटा, m मैंने यहां लिख दिया, v की जगह r ओमेगा लगा दिया, उसका स्क्वायर डिवाइड बाय r. सो फॉर्मूला बिकम f इज इक्वल टू m r square omega square over r. So r cancelled. So f is equal to m r omega square. So do remember, when linear speed is given, use this formula mv square over r. When angular speed is given, then f is equal to mr omega square. And similarly, this can be substituted ma mr omega square. So m cancelled. So here acceleration r omega square. When linear speed given, acceleration v square by r. When angular speed given, it's r omega square. So we have to remember two formula for the force and two for acceleration. So first, f is equal to mv square over r. Second, f is equal to mr omega square. So first acceleration, a is equal to v square over r. And second, a is equal to r omega square. Now the question is, what is the origin of centripetal force?
सबसे पहले ये है कि अगर आप बेटा रोड पे जा रहे हैं स्ट्रेट और आपने टर्न लेना है, रोड इज टर्निंग एट द हॉरिजॉन्टल सर्कल, तो यहाँ जो फोर्स चाहिए होगी सेंट्रीपिटल फोर्स, इट इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर्स। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल रोड के ऊपर टर्न ले रहे हैं, गली में मुड़ रहे हैं, सो फ्रिक्शन इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन समटाइम्स जैसे मोटर बाइक वाला जा रहा होता है, टायर का कंटैक्ट एरिया कम होता है, लेस फ्रिक्शन होती है ड्यू टू द लेस कंटैक्ट एरिया, तो वो क्या करता है, नंबर 2 उसके अंदर वो ऐड कर लेता है कंपोनेंट ऑफ हिज हर वेट। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा जब भी मोटर बाइक वाला आगे जाके टर्न लेता है गली में, तो वो अंदर की तरफ लीन करता है। उसने फिजिक्स लर्न की होती है, वो क्या बनाता है अपने वेट के कंपोनेंट, और कंपोनेंट ऑफ द वेट एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कॉर्नर या टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कॉर्नर आप कह लें, उसमें ऐड हो जाएगा। तो जब वो आपके पास बेटा जा रहा होता है तो वो लीन कर रहा होता है, तो वेट के कंपोनेंट्स, ये वाला जो कंपोनेंट आपके पास होगा बेटा वेट का, ठीक है, वो उसको हेल्प करेगा। सो इफ द हॉरिजॉन्टल सरफेस आप यूज करते हैं, उस पर टर्न लेते हैं, लीन नहीं करते, तो फ्रिक्शन इज सफिशिएंट। लेकिन ज्यादा आपको चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, तो फिर कंपोनेंट ऑफ द वेट, इसलिए मोटर बाइक वाले। लेकिन अगर कार है तो कार को तो हम टिल्ट नहीं करते, इसलिए जब आप रोड के ऊपर जाते हैं, हाईवे के ऊपर जाते हैं, तो ये आउटर एज ऑफ द रोड लिफ्टेड होता है, बैंक रोड आपके पास होता है, टेढ़ा होता है, क्यों गाड़ी को तो टेढ़ा नहीं कर सकते कंपोनेंट, इसलिए वो रोड क्या करते हैं, आउटर एज जो है उसका आउटर बैंक जो है, बाहर वाला किनारा वो ऊंचा रखते हैं, अंदर वाला है, ठीक है, आप सबने ये नोटिस किया होगा। नंबर 1 तो ये है जनाब। नंबर 2, अगर हम लें जनाब सोलर सिस्टम, दिस इज सन एंड दिस इज द अर्थ। अब सन और अर्थ के बीच में यहाँ पे जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, इट इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सोलर सिस्टम के अंदर centripetal force is provided from the gravitational force. Number 3, अगर हम माइक्रो लेवल पे आते हैं, this is the nucleus containing proton, neutron and the electron is revolving, तो इनके बीच में जो centripetal force है, that is provided by electric force. तो फ्रिक्शन भी सेंट्रीपिटल बनती है, वेट का कंपोनेंट भी बनता है, ग्रेविटेशनल भी सेंट्रीपिटल फोर्स बनती है, इलेक्ट्रिक भी बनती है, और समटाइम्स ऐसा भी होता है if the particle, charged particle, is moving in the magnetic field according to Fleming left hand rule, ऊपर या नीचे जब बेंड करता है, this is the circular motion, तो फिर magnetic field भी। So major are friction, number 2 friction plus weight component, number 3 gravitational force, number 4 electric force, and number 5 magnetic force. So these are the major sources of the centripetal force. जब ये forces एक दफा centripetal में convert हो जाती हैं, so then they are unbalanced, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा अनबैलेंस्ड होती है, बैलेंस का कंसेप्ट ही नहीं है। अगर बैलेंस हो जाए तो सर्कल ही खत्म हो जाएगा। हाँ, ये फोर्सेस बैलेंस अनबैलेंस हो सकती हैं, बट व्हेन दे आर प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स, when they are converted into the centripetal force, definitely they will be in the form of resultant force, unbalanced force, because they have to produce acceleration in the body during circular motion.